Hello student, myself Shweta Raut. I am here to teach you information and communication technology. Today's lecture, I am conduct your today's lecture. In today's section, we are cover this topic, that is computer memory. Okay, let's start our today's section. There are memory. There are two types of computer memory. First is primary memory and second is secondary memory. Then primary memories are also two types. First is cache memory and second is main memory. What is mean by primary memory? Primary memory means those memories are directly connected to our processor. These memories called primary memory. And secondary memory means those memories are indirectly connected to our processor. These memories called secondary memory. Primary memories are also two types. First is cache memory and second is main memory. Cache memories are fast in nature and small in size. Cache memory is fast in nature and small in size. It is in the form of CPU register. Cache memories are present in between RAM and processor. Main memory. Main memory is a part of primary memory. Main memories are also two types. First is RAM and second is ROM. RAM means please note down this all full form of these memories. RAM means random accessories memory, and ROM means read only memory. RAM also two types. First is SRAM and second is DRAM. SRAM means static random accessory memories and DRAM means dynamic random accessory memory. Static SRAM are stored, data are stored in flip-flop form, and DRAM data are stored in capacitor and transistor. In this SRAM are continuously refresh, मतलब SRAM को continuously refresh करना पड़ता है और DRAM को refresh करने की ज़रूरत नहीं रहती है. These all are RAM, SRAM and DRAM are the volatile memory. Then second is ROM. These all are the non-volatile memory. ROM means read only memory. There are three types of ROM. First is PROM, second is EPROM and third is EEPROM. EEPROM को क्या बोलते हैं? E2PROM. Okay. PROM means programmable read only memory. In these ROM, a program was conducted. Then EPROM, erasable programmable read only memory. अगर प्रोग्राम में कुछ गलत हो जाए, अगर प्रोग्राम हमें डिलीट करना हो, इरेज करना हो, तो इस कैरेक्टर में आते हैं. दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में. इसमें प्रोग्राम अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू क्या इरेज किया जाता है. दैन थर्ड इज EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. In these ROM, program are erased इलेक्ट्रिक के थ्रू ये प्रोग्राम हम इरेज कर सकते हैं इस रोम में. ठीक है. दैन सेकेंड मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी.
Secondary memory, these all secondary memories are non-volatile memory. First is magnetic tapes, second is magnetic discs, third is optical discs, and last is flash memory. मैग्नेटिक टेप में क्या आता है, पिछले 10 या 20 साल पहले डेटा को स्टोर करने के लिए कैसेट का यूज़ होता था. उसमें क्या कैसेट में टेप रहती थी और वो क्या रहता था, और वो डेटा सीक्वेंस वाइज क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल वो डेटा रीड होता था. मतलब क्या होता था, अगर हम उस सीडीज़ में 4 या 5 गाने हो तो हम डायरेक्टली 5th सॉन्ग नहीं सुन सकते थे, वो सीक्वेंशियली हमें गाने सुनाते थे. ठीक है. मैग्नेटिक टेप मतलब क्या, अपना कैसेट. दैन सेकंड इज़ मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क. अब आप लोगों ने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क देखी होगी. ठीक है. दैन थर्ड इज ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क म्हणजे मतलब आपकी सीडीज, डीवीडीज, दिस ऑल आर द ऑप्टिकल डिस्क. Then last is flash memory. Flash memories means pen drive और memory card. These pen drive और memory card ये तो हम अब सभी लोग यूज़ करते ही हैं. ठीक है. So these all are the computer memory and their types. I hope so आप लोगों को ये समझ में आया होगा. So today's sections are complete. Thank you.